Adventure between ourselves and Hari and his company, Vamaras, and looking forward to a wonderful production where Hollywood and Bollywood meets something that hopefully will turn out to be jolly good. So, now, please give us about this film. Well, I'm going to turn that over to Ryan. I can tell you basically, in a nutshell, that we started creating an idea. We've known about the Indian marketplace as one of the fastest growing marketplaces for the movie industry, and making an independent movie today is very difficult, and it's a very tough business right now in the States. And Ryan and I were talking about some concepts, and he came up with an idea of an adventure, an action movie that would combine both the best of the United States and the best of India together under the umbrella of technology. And I know when I watch television in the United States, there's two things I learned. One is the Indian people themselves you love entertainment. You're a very happy people. You love the adventure. And I also noticed that when I'm watching the stock market, all of the tech people are from India. Yeah. So with those two subject matters in mind, Ryan came up with a great idea of using artificial intelligence as the backdrop for making a very exciting action picture. And I'll let him explain. I don't want him to give away the whole movie, but Ryan, please tell us about this film, AI. What does it mean? इसका मतलब क्या है? AI. What is the meaning? Yeah, so FrAImed, and we're accentuating the AI, which is artificial intelligence. And with the way that artificial intelligence and computing power is advancing so quickly nowadays, the movie itself is kind of like a warning of what could happen if it gets out of control. Okay. And so we took the world of intelligence and the world of truth, and we made a spy thriller using the American CIA and the Indian Intelligence Bureau, and they combine and they have to figure out what's going on with the world of weaponized AI. Oh, it's very interesting. Yeah, it's very fun. I'm super excited about it. It's a two-hander with political implications across both countries, and what story of a CIA officer who gets framed for a terrorist attack in Mumbai. And what happens is when the Intelligence Bureau starts to look into it, one of their analysts partners up with our CIA officer, and they get stuck together, and they have to go on the run and figure out what happened to them and what's happening with the AI. And it's a really fun and exciting world that has a global impact, and that we're really hoping speaks to Indian culture, American culture, and the rest of the world. So, what do you think about India? India's been amazing to us so far. We didn't know all that much before we came. We've learned so much in this past week. Couldn't be more excited for the adventure of doing a full production here. We're going to be spanning several cities, different territories, wearing culture. We'll play in
cinemas around the world where the same movie can resonate with different audiences speaking different languages and everyone enjoying the exact same story no matter where you're from. Okay. Dive headfirst into the world of artificial intelligence for myself. Wow. And so it's one of those things that I'm so intrigued by. I use it as a tool now. And it's also because I've learned so much about it. I'm learning, I'm reading, I'm schooling myself on the technologies. And I've learned so much that I'm also learning to be very cautious of what happens with this technology. And so if we leave the technology out there so that it can just grow in every single way without any constraints or any regulations, then it starts to get worrisome. And so because I've learned so much about it, I want to give a little bit of a warning to the world. Okay. जैसे हम लोग करते हैं पहले भी हमारे अगर कोई भी हॉलीवुड फिल्म आई है तो हमारा पूरा मीडिया जानता है कि उनका अच्छा बिजनेस हमेशा इंडिया से चाहे अवतार हो चाहे तो स्पाइडरमैन हो जो भी अच्छी इंग्लिश फिल्म आई है तो सबसे अच्छा बिजनेस इंडिया से ही है तो मुझे तो उम्मीद है कि वर्ल्ड वाइड से ज़्यादा हम लोग अच्छा बिजनेस इस फिल्म के लिए इंडिया से पूरा कर पाएंगे इंडियन सिनेमा लोग हमेशा पसंद करते हैं और हमारे तो साउथ में मतलब लोगों को एक मूवी 5-5 या 10 बार देखने की और पूरी फैमिली के साथ आती है Okay. ज़्यादा मुश्किल नहीं So I think. Yeah, we're really excited. There's so much unbelievable talent and actor talent here in India, and so we started to look at many different actors here that I'm really excited about. Mohanlal, we're excited. We're going to reach out to his team. We're thinking about folks like Samantha Prabhu or Shruti Hassan, Rashmika. For one of the leads, and you know, just looking into their body of work and what their abilities, it's really exciting to be able to merge the cultures from the American side and the Indian side, and there's just such a deep pool of really incredible actors here. It's very exciting for me as a director. Okay. India, it's a challenge in the whole world with the shift of technology, that everything is moving from the theaters to OTT, to televisions, to phones, all of that stuff. And so what part of the reason that I want to do this is to combine cultures and movie-rich audiences that want to continue to go to cinemas and speak to them with different cultures. And so that's one of the reasons we're doing this is I don't think it's viable just to make basic films anymore. I think we have to try new things with different languages and new cultures and all of stuff like that. And so for that reason is one of the biggest reasons we're actually doing this film. I can say one thing about it. What makes India unique is that over the past few years, since the COVID experience, most countries have seen a decline in theaters. Yeah. India is one of the few countries that's actually seen an increase in the number of theaters over the past few years. So the entertainment market here, even though you've suffered, you're actually returning quickly, faster to the market than throughout most of the world. So it's exciting for us to be part of that growth. I have just two more questions, a short one. Firstly, what language will this be primarily Hindi, Telugu or English? The film? English. Oh, it will be in English. Yeah. And Hindi. There will be multiple languages within the primary film. And obviously, we're talking about AI and looking at, since AI has come, there is a debate even in America, and I believe screenwriters associations over there, they have, I think, discouraged the use of AI for screenwriting. So I just want to try your perspective as a writer, creator yourself. What do you have to say about this? Yeah, well, I think at this point, the technology is not good enough to write something that is emotionally engaging, has character depth, and something that actually humans will connect to yet. I think that it will grow to that point eventually, but at this point, I don't think we're there. But to that being said, you know, I think that it's inevitable. The technology is inevitable, and you know, as a human race, we've fought against technologies as they come in. You just look at things like when we transferred from horse-drawn carriages to cars.
A lot of people fought against the vehicles, but eventually the vehicles go and they just become part of normal society. I think that's going to happen with artificial intelligence is that it's going to be looked at as a tool, and initially people will fight against it, but we will grow into the fact that it becomes everyday life. But finally, I think that there's nothing like what humans can do creatively, and that will always be the case. There's also the issue of copyright safety, because I believe there was a case, I think the Washington Post or New York Times reported an article where somebody's script who must have edited on AI, and then that script landed in somewhere else. So even that has an issue with technology. I can't speak to that personally. I don't know of it. But like I said, I think it's going to be a tool that's going to be used in the future. I think people are worried about the AI because it takes away a job potentially. But hopefully that makes us better as creators. It's actually quite scary. The three of us just shot a movie that we're very excited about called Hollywood Grit, and it's amazing now. Just in the editing room in my home, we can create a voice. Somebody's voice can go on the movie. If we want a new line, say we missed something, we can create that voice in 1 second and replay it. And that's a little scary for the actors, people who do voiceovers. That's where AI, it needs to be regulated. So, what do you think? क्या सोचती हो? क्या सोच रही हो इसमें? कैसे फिल्म बनेगी? I am basically thrilled to be a part of this because ये एक project है जो usually हमने इंडिया में देखा नहीं है. This is a project that is coming from abroad. So I didn't have any idea at start that I'm going to get into this project. I was in terms with different projects. So suddenly this came into the frame, and I was amazed, thrilled, and excited to be a part of this. And I'm sitting with a very beautiful team, very talented people, like Mrs. Scott. He is the very good producer from the Hollywood side, and Ryan, as you all know about his work as well. And VCC Studios, through them I collaborated for this project. And I never thought I'll be a part of this, and I'm super excited. And this is about AI majorly, and इन लोगों को काफी पता है, like the way it is working and how AI is ruling the world now. So it is something new, and that's it. Okay. सबसे अच्छा combination रहेगा ये. Okay. I think it is the brilliant combination because आजकल का जो भी हम मार्केट देखते हैं, because even if you go to whatever channels or OTT, सारे लोग बाहर की मूवीज काफी देखते हैं. तो we are in a collaboration कि आपको इंडियन फिल्म देखनी या बाहर की. We are getting. आइडियली अगर तुमको कोलैबोरेट करना हो तो बॉलीवुड से क्या लोगी, हॉलीवुड से क्या लोगी और टॉलीवुड से क्या लोगी? Collaborate in the sense? In the sense एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, कौन सी इंडस्ट्री से उठाओगे तुम? वो आई थिंक ये जो फिल्म हम बना रहे हैं इसी में वही ब्लेंड है जो सबसे बेस्ट है. बिकॉज दीज आर द बेस्ट पीपल फ्रॉम द हॉलीवुड, फ्रॉम द साउथ. ही इज we all know him, he is a master there. So I think सारा best combination already बैठ चुका है. So that question is already answered by them. Okay, next question. Hello. Yeah. Hello. So हृदयान ने जो फिल्म लिखी है AI, FrAImed AI. So कहीं ना कहीं इसमें जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो नॉट नाउ बट इन फ्यूचर लोग एफर्ट करने वाला है. सो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव रिसर्चर और बहुत ही डाउन में आकर सब्जेक्ट लिखते हैं. Definitely is good writer. Okay. He is very good writer. आशीष माथुर is there. आशीष, से एक सिंपल क्वेश्चन है. What do you think? क्या लगता है कि अब हमारी जो फिल्में हैं, अगर वाकई जैसे सर ने बोला कि स्क्रिप्टिंग में AI आ रहा है, कुछ दिनों बाद कलरिंग में आ जाएगा, बहुत सारी चीजों में आ जाएगा, आपको लगता है थोड़ा सा डेंजरस मामला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि डेंजरस है. ये बेसिकली इसको AI के वॉर में जिस दौर में आप देख रहे हैं, मैं उसको अमेरिका और इंडिया इस दौर में मैं देख रहा हूँ. AI अपनी जगह है, बट ये फिल्म जो है ये इंडस्ट्री में ये प्रूव करेगी यही अच्छे नहीं है. आज हम जाते थे उनके पास, हमारे एक्टर जाते थे वहाँ पे, कितने दिन बैठते थे, पर आज वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं. बिल्कुल. एनी क्वेश्चन? हमारा पूरा ट्राई रहेगी कि हम नेक्स्ट ईयर इसको रिलीज करें 2025, और शूटिंग राजस्थान में
और राजस्थान में हम लोग तालिबान लोकेशन देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान के पास तो जा नहीं सकते, इंडिया में तालिबान बनाएंगे। और मैं इसमें एक पुलिस का करेक्टर कर रहा हूँ और मेरी ज्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं है और मैं इंग्लिश वालों को हिंदी बुलाऊंगा, बट डी एंड हटा के बोलूंगा, मैं ज्यादा भरोसे आता नहीं हूँ। तो एक अच्छा एक हम लोग नया कल्चर लेके आएंगे। एक आधी पंजाबी की गाली भी दूंगा, तो आज तक इंग्लिश फिल्मों में गाली आई नहीं, तो अकर बकर बोल के भूल जाते हैं, तो अच्छी गालियां भी दूंगा। एक नया ट्रेंड पे खेल रहे हैं, अच्छी फिल्म। कितना कमाएंगे? हम कुछ नया नहीं देखेंगे, हमारे पूर्वज ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। क्योंकि अभी देखिए, कभी हम लोग पुष्पा भगवान का नाम सुनते थे जी, तो सबसे पहला एआई तो वही था जो रावण लेके चला करते थे। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी एकदम अच्छा है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अति बहुत खराब होती है जी, लिमिट में रह के काम करें, बहुत अच्छा होगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आपके हिसाब से वन थिंग क्या चीज ऐसी है जो फिल्म देखने के बाद लगेगा यार ये कमाल चीज देखेंगे? तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर ये चीज तो बता दो, थोड़ी हिंट तो दे दो यार। एक्चुअली FrAImed की वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छी है, पहला। और दूसरी बात यह है कि हरि विष्णु जी के परम भक्त हैं। और आज गुरुवार के दिन हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, 3 तारीख भी है, 3 गुरु का भी अंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फिल्म आएगी तो आप खुद हैरान रहेंगे। क्या बात है। एनी क्वेश्चन? हरी सर, एक सवाल आपसे है। हरी जी, एक सवाल आपसे है। आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और आप फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो वो एक प्रोसेस बताइए, वो किस तरह से आप सोच रहे हैं? देखिए, वहाँ मिडिल ईस्ट में हमारे खुद के तो सिनेमे नहीं है, लेकिन दुबई में जहाँ भी हमारे पास सिनेमे हैं उनके साथ हमें टाइप करना पड़ता है। अभी भी हमको साउथ की फिल्में जब करते हैं मिलके करते हैं, कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है कि हम VCC का नाम भी नहीं दे सकते, कुछ उनके भी राइट्स होते हैं। हम लोग आगे जितनी भी फिल्में करते हैं ना, ये सब मिलके ही करना पड़ता है सारा काम। आज आप मीडिया से हमारी बाइट लेंगे, यही बाइट हमारे साउथ में भी जाएगी, तो इसी तरह हमारी फिल्म होती है सर, मिलजुल के करना पड़ता है सारा और अच्छा करें। साउथ मार्केट किस तरह टारगेट करने वाले? बिकॉज़ आपने वो भी कहा है साउथ में तो सर अच्छे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साउथ का तो कवर करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमने ट्राई कर रहे हैं मोहनलाल जी को लेने का, अभी उनके पास अप्रोच कर रहे हैं, अगर मोहनलाल जी ने जस्ट बोल दी तो मैं इनको गारंटी दे सकता हूँ 300 करोड़ तो कल मलयालम से ले लेंगे हम। वाह, क्या बात है। हिंदी मार्केट में सोचा आपने? हिंदी वाले तो जी बहुत ही अच्छे हैं, जिसको अगर साउथ का टैग लग जाए तो हिंदी में फिल्म देखते ही देखते हैं। ये थैंकफुल हूँ मैं मनीष जी का, उन्होंने सबको सिखा दिया कि हिंदी में फिल्म देखनी है। हिंदी में एक्टर्स वगैरह हिंदी में जी हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी हमारा बात चल रही है समांथा प्रभु से और श्रुति हसन से और रश्मिका मैम है, और हिंदी से एक हमने बी नेहा जी को सिलेक्ट किया है करेक्टर के लिए, हाइकर का करेक्टर है, तो एक करेक्टर मैं कर रहा हूँ। मोहनलाल जी IB के चीफ हैं, हम ऐसी मतलब उनसे देखो अभी फाइनल होने पे हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके साथ, और अभी हम चाहते हैं कि हिंदी से बड़े अच्छे एक्टर लें। क्या बात है। ऑन द फ्लोर कब जाने वाली है? और हम लोग फरवरी क्योंकि इनके लिए वेदर भी फॉर्म लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इनको हम जून जुलाई लेंगे तो बस शूटिंग ही होगी। राकेश जोरी साहब, राकेश भाई, मैं जैसे कुछ समय पहले बात, ये कौन सी वो चीज है? वो चीज ये फिल्म में ये एक चीज है जो हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किस चीज की? CIA की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, इंसान की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, IB की भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी हो सकती है, सब चीज की इंटेलिजेंस हो सकती है। लेकिन ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी है। ओके। एक मिनट पांडे जी था, हॉलीवुड की पिक्चर में अक्सर गाने नहीं होता है, इस पिक्चर में गाने होंगे या क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है, बताओ क्या बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस फिल्म में गाने होंगे या नहीं होंगे। इंडियन की आदत है, आपको गाने बहुत पसंद है, आपने इसलिए बोला, तो हम प्रमोशन सॉन्ग जरूर रखेंगे, इसलिए हम समानता प्रभु से बात कर रहे हैं। मतलब आइटम नंबर होने वाला है। हाँ, और रश्मि का भी फिर मैडम आप जानते हैं जी, फिर वो भी पुष्पा अपने दम पे खींची है। हाँ, ये बात है, ये कमाल की एक्ट्रेस हो की। म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में सोचे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किसको लेना है? हाँ सर, मेरा पास चले तो मैं तो प्रीतम जी को ले लूँ, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। क्योंकि आप थोड़े से आपको पता है अंग्रेज लोग हैं, तो ये भी अपनी मनमानी करेंगे ना कुछ, तो रखेंगे जी गाने। How much action do we see in film? And is it going to be AI generated, or is it going to be your input as well? Yeah, so this is an action thriller spy film, and so
we're going to lean heavily into the action because that's what the audiences want to see. That's what I want to see, right? And so what's happening is that the AI is causing chaos, and in turn, there's some big action set pieces. So we open up the movie with a giant action piece, and then it is a wild ride throughout that carries us through. And so, from my experience, I spent 8 years in the United States military myself when I was young. And so this world is something that's very special to me in the intelligence and the action world, and it's something that I love as a movie goer, and it's something that I love to create as a filmmaker. The last question. Language में भी films कर रहे हैं Bollywood में. So where do you see yourself with such a mega project जो FrAImed बन रहा है? आप अपने roles कैसे diversify करने वाले हैं? मैम, जब हम लोग बैक पे काम करते हैं, कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, तो हम फिल्में करते हैं ना, लोगों को देख देख के हम भी एक्टर बन जाते हैं। कुछ लोग शर्माने लग जाते हैं, कुछ लोगों की शर्म उतर जाती है। जिसकी शर्म उतर जाए वो बेस्ट एक्टर बन जाता है। तो मैंने भी सोचा करके देखूं, और आपके हिंदी में तो मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, जहाँ तो कमाल की एक्टर हैं। साउथ में मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ बड़े अच्छे एक्टर हैं, जहाँ तो माशाल्लाह काम चल ही जाता है सबका। अरे सर, किसी फिल्म का एक डायलॉग बोलो ना, ऐसा मत बोलो यार, सब लोग सुनना चाहते हैं। किसी हिंदी फिल्म का वो एक डायलॉग जो आपका बिल्कुल फेवरेट हो। मैं थोड़ा परफॉर्मेंस चाहता हूँ सर, प्लीज बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर, एक तो बनता ही नहीं बनता है। जोरदार ताली लीजिए प्लीज, कम ऑन। अरे सर, कम ऑन। यस कम ऑन। हालांकि मैंने रिसेंटली फिल्म कंप्लीट की है, वीरप्पन पार्ट जी। मैंने शिवराज जी बड़े एक्टर हैं हमारे कन्नड़ा के, उनका आगे कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। उसमें मतलब रामू जी की थ्योरी की फिल्म बनी है। तो हमने दिखाया है कि वीरप्पन जब मर जाता है तो वीरप्पन का सोल एक पुलिस में आ जाता है। ओके, वो पुलिस वाला मैं। ओहो, डायलॉग। जब हम वीरप्पन को मार रहे थे तो वीरप्पन ने लास्ट फिल्म थी, उसके अंदर भी उन्होंने डायलॉग बोला था कि मैंने 96 पुलिस वालों को मारा है और मैं अभी 100 सेंचुरी पुलिस हूँ। मेरा डायलॉग जी। अबे चोर, मैं दिल्ली का पुलिस वाला हूँ, मैं गिनती नहीं करता मैंने कितने चोरों को मारा है, और मैं 100 सेंचुरी तो क्या, अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड आप दिल्ली पुलिस का देखो तो 1000 से भी ऊपर आप मार देते हैं लोग। So this was, I think, our third or fourth option, just because the first 2 or 3 we didn't like, and what we really try to do is capture what the movie is and showcase to an audience, what it's going to be. And so I have to give credit to my co-writer Christina Denton. This was her idea. We had another idea that was like this before, slightly different, but it evolved into FrAImed with a different spelling with AI in the middle. So we just really wanted to put the AI front and center and showcase that our characters get framed. Perfect. Okay. Does it also stand for American Indian? Yes. Yeah. I like your style, sir. I like it. Yeah, brilliant. Keep this guy around. Yeah.